जिंदा रह के हम करेंगे क्या, ये बता दो। On the spine-chilling night of 23rd February 2020, Delhi's Jafrabad turned into a lawless zone. हम तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। Taken over by insane butchers out on a murderous spree. उम्मीद नहीं थी सर कि घर में आग हमारे लग जाते। It was not natural, but a man-made disaster that unleashed an avalanche of horrifying atrocity on the helpless residents. ये देखो दंगाइयों ने कुछ नहीं छोड़ा इसका। With lethal arms and ammunition, the region was poisoned with horrific screams, gunfires, and fuming flames. Houses were set ablaze, locals were looted and murdered in cold blood. क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने उनका? क्यों गोली मारी उन्हें? Heavily consumed by hatred and anger, the crowd was all set to liquidate their own neighbors and co-inhabitants. Children, women, and even senior citizens were all aghast captive in their own houses, waiting for their turn to be butchered just like animals. हम क्या करें, कहाँ जाएं? और हम लोगों को दौड़ा के मार रहे हैं। Situation was indeed grim, with deafening shouts for help. यहाँ पे सिलेंडर फाड़ा था। हमारे माल का, घर का, सबका नुकसान हो गया। जैसे बच्चे की किताब थी, बच्चे के बिस्तरे थे, 15 बच्चे मौजूद थे यहाँ। अनवाड़ी अभी 1 महीने पहले इसके पापा दे के गए थे। ऊपर से उतर के अंदर से सिलेंडर फाड़े हैं। उम्मीद बिल्कुल हम लोग खो दिए थे। फ्रिज था, वॉशिंग मशीन था, टीवी था, डबल बेड थे। 20-22 लाख रुपए का नुकसान है तीनों फ्लोर में। With the hard-earned money of many years, victim Sharif had set up a small-scale leather factory. By dint of his hard work, his business had gradually gained momentum with regular orders and growing workers. But all of a sudden, the attack had brought him back to square one. 24 तारीख थी, लेबर कारीगर सारे काम कर रहे थे यहाँ पे। तो कारीगरों का मेरे पास फ़ोन आया कि शरीफ भाई यहाँ पे दंगा हो गया बहुत ज़्यादा, गोलियाँ चल रही हैं यहाँ पे, आप जो हो मार्केट से आ रहे हो तो इस साइड मत आना, आप जो उसी साइड में रुक जाना। The frenzied rioters in front of Sharif set his factory on fire. Poor Sharif could not do anything but see his hard work turning into ashes. 30 कारीगर थे मेरे पास, कारीगर सारे रोने लगे। अच्छा खासा माल बना हुआ था, 2200 पीस थे यहाँ पे। सारा लिंटर फट गया था, माल सारा ऊपर से गिर गिर के नीचे आ गया था, जल गया था। आधे से ज़्यादा माल, लगभग 1200 पीस मेरे जल चुके हैं यहाँ पे। What Sharif lost in the carnage was just his factory. But there are people who were left with nothing but a pair of clothes they had put on. They rushed out all alone to save their lives, leaving behind all their hard-earned assets. एक लड़का आया था, जना फरिश्ता बन के आया था, जना कौन था भैया, उन्होंने आके कहा ना खा ली है, क्या कर रही हो, जल्दी चलो निकलो। और ऐसा ऐसा सुनने मारे, गली जलाने का इरादा। तो हम ऐसे ही उल्टे ऐसे ही भाग लिए भैया। Razia Begum had lost her husband in 2012. And with the help of her brothers, she was somehow taking care of her children. The rioters brought down her house by blasting a cooking gas cylinder. आके देखा था सब कुछ बर्बाद हुआ पड़ा, सब जला हुआ पड़ा। Life stared at them at a juncture with blurred hopes and succumbed courage. They were stripped of all their belongings. They had lost the roof over their heads and livelihood to feed their family. With no sympathy or support from the establishment, all turned into ashes within no time. मेरे घर में एक जान के अलावा कुछ नहीं बचा। However, as it is said, when one path gets blocked, several others open up. Amidst this hostility and violence, there are people who came forward like angels to rescue. हमारी ये कोशिश होगी कि इस काबिल बना दिया जाए कि ये लोग रह सकें। Under the aegis of Vision 2026, Society for Bright Future, SBF, in association with Human Welfare Foundation, HWF, and Human Welfare Trust was one of the organizations that work tirelessly for the victims, irrespective of caste, class, or age.
With sensible elders and energetic youth, they stand firm with the victims to extend all kind of support. When such riots break out, victims require urgent assistance. In view of this, volunteers provide service in relief camps day and night. पहले हमारा काम ये था कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ देना था, खाना, मेडिसिन, ट्रीटमेंट और लोगों के लिए रिलीफ कैंप लगाना, वहाँ चीज़ों को प्रोवाइड करना, उसमें काम किया और उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। Vision 2026 not only came forward to rebuild Razia Begum's house, but also constructed the second floor of her house so that she can have a consistent income by letting the rooms on rent. Not only Razia Begum, but many such helpless people got support and aid to start life all over again with dignity. उस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम लोगों को राहत कैसे पहुंचाएं, रिलीफ कैसे पहुंचाएं। हमने इसलिए उस वक्त कैंपों में खाना, कपड़ा, तख्त, गद्दे और इस तरह की चीज़ें, मेडिसिन सप्लाई की। Ruined by the savage onslaught, Bhure Khan's agony can be understood by the mere fact that though he could save the life of his family on that fateful night, but when he returned to see his house, there was nothing but a heap of ashes. Bhure Khan and his brothers' hard-earned asset and property disappeared in no time. All they had was the clothes they had put on. Unfortunately, the aid they received was also a drop in the ocean. दंगाइयों ने नीचे से सारी दुकानें जला दी थी, ऊपर से सब घर जल गया था हमारा। जब देखा नीचे भी आग लग गई, ऊपर भी आग लग गई है, तो यहाँ से भागना बेहतर समझा, तो छत से कूद के पीछे की गली से भाग के गए। जिन लोगों के मकान डैमेज हुए हैं, जलाए गए हैं, हम लोग उनके मकान उनको वापस बिल्ड करके देंगे और जिन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं उनकी दुकानें बना के देंगे उनको। उनके जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स का नुकसान हुआ है उसको जो है वापस से बिल्ड करेंगे। उसी के साथ साथ में हमारे सामने बहुत सारे वो लोग भी थे जिनके लाइवलीहुड कम प्रॉब्लम था। Established in 2006, Vision 2026 is a result of the utmost sincerity and untiring public service rendered by experienced social workers. It is an organization that is engaged in social service. इंसानियत अहम है, ये कम्युनिटी या कोई तबका या कोई रेस या कोई कास्ट अहम नहीं है। The evil fanatics left no stone unturned in unleashing atrocities on the poor people. Even one of the victims, Muhammad Shisha's rickshaw, wasn't spared, which was the sole source of income and support for his mother and sister. लूट मार हुई थी घर में, जो हमारे पास कुछ नहीं था। किराए का रिक्शा चलाता था मैं। रीजन ने दिया है काम करने के लिए। For Shabana, this aid is a boon, as she was stripped of her savings that she had collected with great difficulty for the marriage of her daughters. मैंने रिक्शा की मांग की कि कम से कम रिक्शा मिल जाए तो मेरा काम धंधा रोजगार मेरा घर का चल सके, खर्चा वर्चा। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका। Muhammad Asif is one among these unfortunate victims who lost not only his motorbike repairing workshop but also his small house. मेरी शॉप वगैरह थी बाइक रिपेयरिंग, तो वो उसमें तोड़ फोड़ करी गई, जलाया गया और घर पे बाइक वगैरह मेरी 2 खड़ी थी तो उसे जला दिया गया और घर में लूट मार वगैरह करी गई। ये सब हुआ था बस। वहाँ पे एक्चुअली अब हिम्मत ही नहीं पड़े वहाँ पे दोबारा से काम जमाने की, मन ही नहीं करा कि वहाँ पे दोबारा से करूँ, इसलिए हमने सोचा अपने एरिया में कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Like Asif, there are a number of youths who used to support their families with their hard work and labor. But this unfortunate incident destroyed their livelihood and hope.
As part of the support provided by Vision 2026, Mohammad Hassan received a Bolero and 2 more youths like him received Tempo and Wagoner to start their livelihood all over again. लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास में हुआ था। इसमें 55,000 का माल भी था, तो माल भी पूरा जल गया। फिर भी हम यहाँ से निकल के बाहर गए तो फिर हमें घेर लिया 15-20 लड़कों ने, तो फिर हमें मारा है, हमारे वाइफ को मारा है, इनको। उसके बाद उसमें से एक लड़का जानकारी में था, वो कह रहा तो इनको जाने दे भाई, ये तो यही का है, जब हमें जाने दिया। विजन 2026 है जो मेरी बोलेरो गाड़ी जैसा जला है, इसमें गई नई गाड़ी शोरूम से निकाल के दिया है मुझे, नई गाड़ी जो रोज़गार पे चल जाए, दोबारा फिर खड़े हो जाए पैरों पे, इसी हिसाब से दिया जो परिवार को चला सकते। Under this project, the life of Naushad and his wife got a new leash of life, as they were provided a thela and a sewing machine. Besides, their small house was also rebuilt that brought smiles to their face. बाहर छत डाली थी, गेट लगाए थे, पेंट करा था, प्लास्टर करा था, घर में फिटिंग करी थी, बोर्ड वोर्ड सब लगाए थे, ऊपर बाथरूम बनाया था, लेटरिन बाथरूम अटैच, उसमें गेट लगाया है। हम शायद इतनी जल्दी नहीं कर पाते। When the riot broke out in the area, this poor couple had no time even to collect the valuables from their home. Their household items, their cattle, and even the jewelry that they had saved for their daughter's wedding, all were looted. यहाँ रह नहीं पाते और क्या होता। यहाँ देखते थे वहाँ मारते थे, चप्पल भी नहीं पैरों में पहन पाई, यहाँ से पहन के जाते। उनने मुझे खाने को राशन दिया, जौले दिया, महीना 2 महीने। मेरे घर में इतना कुछ नहीं बचा था जो हम रोटी करके खा लेते। आपने जो काम करवाया है, हम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। In fact, people living in small houses do nurture big dreams, as they weave dreams out of their dishelped life. Their aspirations for a better life never gets lost. Sahiba is one such brilliant girl who, despite all odds, worked hard on her studies for a better future. On 24th Feb, her house was also set ablaze. कुछ भी नहीं था सर, ना तो हमारे पास ले जाने के लिए पेन था, ना कुछ किताबें पढ़ने के लिए थी जिससे हम एग्ज़ाम देते, और ना ही हमारे पास ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं थी। Sahiba did not lose hope, even in such trying times. She secured excellent marks in her 12th exams. Looking at her unflinching dedication, Vision 2026 took the responsibility of her educational expenses like many other students. स्कॉलरशिप वगैरह दी है और मेरे पापा के लिए भी काम शुरू करवाया, ई रिक्शा दिलवाया, हमें सिलाई मशीन भी दी है। विजन 2026 की तरफ से हमें एक स्कॉलरशिप दी गई है जिससे हम अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, रिपेयर करवाया पूरा घर, और मुझे भी स्टडी में बहुत साथ दिया है। Writers have no religion, and in such mayhem, they take the opportunity only to loot and steal. Gulzar from Shiv Vihar is still frightened to narrate his story of that fateful night. At one point, he had lost all hope. His house was set ablaze by the rioters. तो गोल्ड था 3 बेटियों का जो यहीं पे रखा हुआ था, और जिस बेटे की शादी करने वाले थे 15 दिन शादी के रह रहे थे, वो सब चला गया था। जिम में 15 लाख रुपए लगाए थे, जिम का कुल 1.5 लाख रुपए का कबाड़ भी रहा हो। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मुसलमान रहते थे, सब डर चुके थे, सबके मकानों में आग लगा दी थी, मार पीट कर रहे थे, बुरा आलम था, सब अपना आप को छुपा रहे थे, बस ये था। It is not that this horrific incident ruined only one particular sect of people. Hindus and Muslims, all victims remained mute spectators of the devastation in this avalanche of havoc. Dr. Kashyap had been a medical practitioner who attended to all patients with equal care without any discrimination. His clinic was also set on fire by the insane rioters. 3-4 दिन के बाद आया मैं यहाँ पर, देखा तो बहुत ही बुरा हाल था। मेरा थोड़ा कैश भी पड़ा था, बच्चे का एडमिशन कराना था मुझे, फिर कहीं से कोई हेल्प नहीं हुई मेरी, दिल्ली सरकार से कोई मदद नहीं हुआ। फिर विजन ही मेरे आगे आया, किसने मेरा रेफरेंस दिया उनको और मुझे कॉल किया। करने के बाद में फिर मेरा जो भी सेटअप था
उन्होंने ही किया। Vision 2026, spread across 20 states, renders untiring social service without any discrimination. In collaboration with more than 200 local NGOs, it has successfully completed approximately 500 projects to provide relief and support to around 10 million victims. Primarily, it works at various levels in area of education, health, and economic support to the poor, orphans, and women for a dignified life. हमारा विजन भी यही है, हमारा मिशन भी है कि हम उन इलाकों में जहाँ पर हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में और डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में जो बहुत बिलो एवरेज हैं, वहाँ हम लोग इंटरवीन करें। Under its housing projects, houses were rebuilt for those who lost their houses. Livelihood and employment is a great challenge for the victims who lost everything in such carnage. Therefore, under this mission, so far 23 victims have received e-rickshaw, 23 beneficiaries got vegetable tailor, over 95 shops established, and 34 sewing machines and 23 vehicles have been distributed to the needy. उन्होंने मेरे लिए जैसे मैंने शुरू में काम किया था उस हिसाब से उन्होंने मुझे उस मकाम तक पहुंचा दिया। मैं तो बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरा काम शुरू करवा दिया विजन ने दोबारा से। खुशी है बहुत, उन्होंने हमारे लिए इतनी मदद करी, बहुत कुछ करवा दिया और क्या भाई, उन्होंने जो की हम उनके शुक्रगुजार हैं। So far, 74 shops and houses have been repaired. Over 40 shops and houses have been rebuilt all over again and handed over to their owners in order to provide employment and livelihood. So far, 223 victims have been provided with livelihood support. अब हमें अल्लाह ताला ने चले एनजीओ की मदद से अपने हमारा घर तैयार कर दिया। अब तो हम खैर आएंगे तो यहीं और कहाँ जाएंगे, लेकिन वो दहशत हम निकाल नहीं पा रहे। और इन्होंने 2 मंजिल के करीब हमारी ऊपर मरम्मत करवाई है। आज हमारी मदद हो रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम भी इस लायक बने कि औरों की हेल्प और मदद कर सकें। The situation of orphans and widows were really grim. So far, 46 orphans have been adopted and 15 widows have been provided relief. Besides that, over 117 economically weaker students have been provided with financial support for their education. विजन हार्मनी सेंटर जो हमने अभी संग बुनियाद रखा है, ये बेसिकली उस इलाके में सारी कम्युनिटीज़ के दरमियान पीस एंड हार्मनी बिल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर बन सकता है। वहीं साथ साथ में हम इस बात की कोशिश करेंगे कि समाज के सारे तबकात जो है इन सहूलतों से फ़ायदा उठाएं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस सेंटर के ज़रिए से समाज में एक हार्मनी क्रिएट कर सकें। So far, 2,137 victims have been supported with medical aid, 782 food packets distributed, and more than 1,500 people have been supported with relief, and 166 victims provided legal aid. At the end of the day, we are trying to do whatever best we can do. Vision 2026 is not a mission that just sets its target up to 2026, but it's a lifelong support system that is going to stand with the poor and helpless till they have a secure and safe life.